मैंने इस सेशन को एक यूनिक टाइटल दिया, वेस्ट बंगाल रिजल्ट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर राउंड 1 पीजी एंड काउंसलिंग की खिचड़ी। बट ये खिचड़ी स्टूडेंट को हजम नहीं हो रही है, ये हार्मफुल है। सिस्टम को चाहिए इस खिचड़ी को ठीक करे। आगे फुल वीडियो आप लोग देखिए और फिर कोई कमेंट करिए, मैं श्योर कमेंट को आंसर करूंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जूनियर्स, सीनियर्स and all. Here I am with the West Bengal first round of counseling, and you can say the counseling is going pretty good. Just one to two things you should know about the West Bengal, that there is no caution deposit, so everyone should attend the West Bengal counselings. Each and every round there is facility for registration and document verification. Government has given enough space for all the students to attend all those counselings. Fees are also reasonable, not very high, not very low. If you want any other branch except main branch, radiology, dermat, gynae-ops and medicine, you can expect your selection at very low rank also. The colleges are also good. The basic infrastructures are okay. Right now, some news are coming about the West Bengals, but if you are watching online processes carefully, you will come to know that it's a gossip state. People are telling a lot, but lastly, only the online counselings and online things are going to be implemented, and that is by the government. Here, if you want MS Orthopedics, MS General Surgery, Anesthesia, TB chest, you can go up to, it can go up to 70,000-80,000 rank also. So watch the counseling process very carefully and do the West Bengal counseling. Right now, there is some shift from South India to North India, from West Bengal to Bihar, from Bihar to UP for the PG seats, and it is very good that all the candidates, if they want seat, they are going everywhere depending upon the choices. One thing I will ensure about the college is that basic infrastructures of any PG college is good. What you have to see, you have to see the online professors, the online things are correct or not. Suppose there are 4 professors in any department, so you have to consult that place properly, that are they doing their job on regular basis, or some are on contractual basis, or some are on regular basis. This you can only know by the real situations of the people at that place, or by the immediate second year. Or if there is no second year, then you should visit the college personally or by your relatives before taking those seats. Regarding stipend, the same things are there. Apart from that, what is happening here? Other things candidates are facing. Now you are facing the overlapping. Telangana and Rajasthan, both states are yet to be declared. And if they are not
declaring their results, candidates again will be in problem. These are the things which must be made clear by the central authorities, that means ki the NBE or MCI or whatsoever the thing present at the center. कैंडिडेट को चाहिए कि सब ओवरलैपिंग नहीं हो, क्योंकि आफ्टर दिस राउंड मॉप अप राउंड पे और रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, और जैसे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, कोई अगर अच्छी सीट होती भी है तो फिर ये डुअल नेचर ऑफ काउंसलिंग है कि वो ऑलरेडी टेकन स्टूडेंट्स को वो सीट नहीं मिलेगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट्स दीज थिंग्स आर टोटली मेकिंग whole process of counselings in danger, or that is against your right also. Yesterday I was viewing one court hearing regarding normalization and all those things. Just authorities were unable to answer or unable to make the thing clear in front of court in general view. But what will happen without Supreme Court or High Court or any court judgment? You are doing the counseling, already session is expiring. Lastly, what court will do? Court will accept those counseling. ये चीज़ें पूरे के पूरे सिस्टम का फेल्योर को शो कर रहा है. मेरी बातें बहुत सिंपल है, और आप जैसे वहाँ पर भी क्वेश्चन हो रहा था, थिंग्स वेयर वेरी सिंपल, बट ऑथोरिटीज वी आर अनएबल टू आंसर. ये क्लियर कट स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है. स्टूडेंट्स का इसमें कोई दोष नहीं. वो जितना जगह आप मांगते हैं सिक्योरिटी 2 लाख, फिर कर्नाटका में सिक्योरिटी का नया सिस्टम चालू होगा, वह 10 लाख मांगेंगे, फिर 20 लाख 30 लाख तक डिपॉजिट मांगेंगे. एक कैंडिडेट को एक सीट सिक्योर करने के लिए अपने आप का कितना प्योरिटी शो करना पड़ेगा, और जैसा आप शो कर रहे हैं आपका सिस्टम क्या शो करता है? कभी भी नहीं. अभी ये काउंसलिंग्स भी आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा जब फिनिश हो जाएगा तो इसमें लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स आपको दिखेंगे, बट आपके पास अभी कुछ भी नहीं है. आप जस्ट काउंसलिंग के रूल्स को फॉलो करिए, और आप जितने दूर तक जा सकते हैं और जितना दूर तक कर सकते हैं, सीट को ग्रैब करिए. रिगार्डिंग एनी थिंग्स, इफ यू वांट एनी हेल्प, you please contact to our team. We will help you. Thank you.